Gitanjali, who's there with us today. Gitanjali had a terrible accident, we all know, a month back, and she came all the way from a very far off place to Medica and was deftly handled by Dr. Akhilesh Agarwal and his team of surgeons, anesthetists Dr. Ramya Mishra, pediatrician Dr. Nicola, who all will be there to discuss how they met Gitanjali and what exactly happened to her and how they have successfully treated her case. May I now request Dr. Akhilesh Agarwal to please stand on the stage. Dr. Ramya Mishra, please on the stage. गीतांजलि की पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज स्टेज में आ जाइए. Dr. Nicola will join us soon, so we will be having her also on the dais once she comes in. I now request Dr. Akhilesh to please come forward or share it from there also about how he met Gitanjali and how this case was successfully handled at Medica. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. So, as we know, this little girl, 6 years old, she met a terrible accident back in Jharkhand when she was with her parents on a bike. She was hit by a truck from behind. So this was her when we received her. This looked still not that bad, but she had a component of head injury and she was quite young. So we took her for surgery after stabilization. On debridement, we saw this is the condition, and the worst part was that her eyelids were avulsed from her eye socket. The conjunctiva was torn off. Her nasal passage, you can see the two tubes projected. Can we switch off the lights so that we can? You can see the tube. So her nasal passage was all avulsed from her. You can see the bony part. So after proper debridement and giving her anesthesia, we took her for surgery. Special care and the big problem was taking care of her conjunctiva, her eyelids, so that it doesn't injure her cornea, which would have led her to be blind. Her nasal passage had to be reconstructed so that she can breathe properly later on. She doesn't have any issues with breathing. And of course, she's a young girl. We had to take care of cosmesis apart from the function. As her half of the face, as you can see in this picture, was avulsed. So there are few ligaments which are attached to the bone. If they are not reconstructed, this whole skin would have fallen down like a 80 years old patient. So that was reconstructed, and here she is. We can all appreciate her smile. This is 15 days post-op once she came, and here she is today. Thank you. If there are any questions, I'll be happy to. Okay. अगर आपके कोई questions हैं, I would like to answer, but before that, I'll ask Dr. Ramya Mishra, sir, to give a brief on the technicalities of anesthesia, which was very vital in managing this case. Good afternoon, everybody. It was really an unfortunate road traffic accident for little Gitanjali. She was on a scooter with her grandfather, and there was a four-wheeler which hit the scooter from the back, and there was head injury. There was a big scalp hematoma on the right side, and there was facial degloving injury. The facial muscles were totally avulsed, and the right lid muscles were avulsed with comminuted fractures of the nasal bones and the right zygoma. In the emergency, she was attended by a group of doctors, mainly neurosurgeon, orthopedician, ophthalmologist, maxillofacial surgeon, our plastic surgeon Dr. Akhilesh Agarwal, and the pediatrician. The trauma protocol was followed, but her
CT thorax, CT cervical spine, CT abdomen, everything was fine, luckily. She was having a chink of blood in the brain, but she was conscious, oriented, and it was decided to go on conservatively to manage. So she was taken into OT. In the operation theatre, the challenge before the anesthesiologist was there was degrading injury of the face. The total face was swollen, and it was really difficult to give general anesthesia and to put a tube into the trachea. But it was done uneventfully, and with the help of our efficient plastic surgeon Dr. Akhilesh Agrawal, the surgery was going on with the reconstructive surgery, and real challenge was to reconstruct the lid muscles of the right eye. It was around 3 hours of surgery, and everything was uneventful. Patient was shifted to pediatric ICU for management of the pediatric team headed by Dr. Nicola. It was a total uneventful, and due to the blood loss during the road traffic accident, we had to give 1 unit of blood there, and everything was uneventful, but it was a very challenging case because this is a multi-specialty hospital, because all types of surgeons, anesthetists and critical care physicians, pediatricians all are present here, and we manage such cases very frequently in our hospital. That's why it was possible. And patient was discharged after a few days, and again patient came back for suture removal under anesthesia. Everything was uneventful, and the credit goes to the team of doctors of Medica. Thank you. As we have heard, it was a surgical challenge, anesthesia challenge, but the most vital part of the management was pediatric management. These kids have a very small reserve. So our team of pediatric doctors headed by Dr. Nicola ably managed the kid, and I would request her to give a brief about what she did for her kid. Thank you, Dr. Akhilesh and Dr. Mishra, for such kind words towards the pediatric department, appreciating the little that we do in all these cases. Of course, yes, this child came to the emergency, I remember, and she looked so disfigured. The face was so badly disfigured. And now you wouldn't believe looking at this child now. So what a wonderful job plastic surgeon, our Dr. Akhilesh has done with this child. It's been really it's been a piece of art rather than a piece of surgery, I would say. Yes, we received the child after the surgery. Even prior to the surgery, there was, it was a trauma. Initially, for pediatrics, the main thing is the parents are so shattered after such an incident, something that's just out of the blue. A normal child, suddenly encounters a road traffic accident and thereafter being brought to the emergency. So handling the parent, handling the child, stabilizing the child before surgery. And once we got the child after surgery, of course, PICU, we have a mammoth task of controlling infections, managing fluids and such things. Of course, I must say that even though, however, traumatized the parents were, both the parents have been so supportive and so appreciative of what the entire team has done. And I think that's a very important thing which will, helps to get the treatment done. It helps, it's easier to take decisions when the parent has total trust and complete trust in you. And from there on, we took it, and slowly she came back. Still the swelling was there, but now you can see she looks perfectly normal. So I think it was wonderful teamwork done, and it's kudos to the whole team. Thank you. We will conclude the press briefing. I'm sure all of you will be having questions. আপনাদের যদি নিজস্ব কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা নিশ্চয়ই প্রেস ব্রিফিং এর পরে আমাদের ডক্টরদের সাথে কথা বলে নিতে পারেন। আমরা রিকোয়েস্ট করব একটা গ্রুপ ফটোর জন্য। क्लिनिकल टीम पेशेंट के बाहर लोग के वी विल रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड फॉर द ग्रुप फोटो। आप लोग थोड़े सामने आ जाएंगे।
अच्छा आप इधर आइए ना थोड़ा सा, इधर आइए, इधर आइए, नीचे आइए। अच्छा क्या हुआ था थोड़ा बेटे बताइए, क्या हुआ था? पकड़िए ऐसे बताइए, नीचे बदल। मेरा बेटी गीतांजलि कुमारी दादा के साथ स्कूटी में बैठी हुई थी। सिंगल रोड था, उसमें उधर से बैक आया 4 व्हीलर, जगह नहीं मिलने पर थोड़ा लड़खड़ाया, उसे बच्ची गिर गई। उधर से धक्का मारा, बच्ची गिर गई, उसमें लग गया 4 व्हीलर से। और फिर मैंने सुना तो फिर अपना झारखंड गिरिडीह से धनबाद हम लोग आए। धनबाद से फिर रेफर किया गया कि आप मेडिका कोलकाता ले जाइए। वहां से हमको रिलेटिव भी बताया कि मेडिका अच्छा हॉस्पिटल है, आप वहां ही लेके जाइए। हम यहाँ लेके आए, हमको सब चीज का फैसिलिटी मिला। वहाँ घटना कब हुई थी? 9 बजे सुबह, कब की घटना ये? 25 तारीख 9 बजे सुबह घटना हुआ था, दिसंबर महीना। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप कितने दिन में यहाँ लेके आए? हम 12:30 बजे रात को हम पहुंच गए। फिर यहाँ पे अस्पताल में मेडिकल का आपको किस तरह से ट्रीट किया यहाँ पे? बहुत जल्द, तुरंत हम जैसे लाए उस तुरंत हमको ट्रीटमेंट मिल गया तुरंत। बच्चे का फेस किस कंडीशन में था? बहुत खराब कंडीशन में था। क्या क्या हुआ था जैसे बताइए। हम ये वाला आँख तो पूरा झप गया था, कुछ तो दिख ही नहीं रहा था, ऐसे यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ था, बहुत खराब कंडीशन में था। यहाँ लाने के बाद हमको 4 दिन में रिकवरी दे दिया गया, बहुत जल्द ट्रीटमेंट हुआ, रिकवरी बहुत जल्द ही कितने मिली। साल की बच्ची है वो? 6 साल की। अब उनके पापा हैं, उनकी माता जी बच्ची? हाँ, माता पिता। आपकी क्या प्रतिक्रिया रही उस घटना के दौरान? अभी कैसे हैं, क्या महसूस कर रही हैं? अभी बहुत अच्छा महसूस हम कर रहे हैं। क्या हुआ था, आपने क्या महसूस किया, अभी क्या सोच रहे हैं? जो बच्चा को किसी को कुछ होता तो माँ को कैसा लगता है, और सही लग रहा था। अभी मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। ये जो बच्ची इतनी स्वस्थ हुई है, इसका पूरा धन्यवाद किसे देना चाहते हैं? क्या भगवान को जाया जाता है, फिर सर को जाया जाता है, अखिलेश सर को जाया जाता है, भगवान के रूप में सर आए, बहुत जल्द काम हुआ है। तो अपना बच्चा को माँ बाप देखकर सभी खुशी होता है। बाबू इधर आओ, थोड़ा सा अंकल लेके आइए, इधर आओ। इतु नहीं है, इसको गोदी में लेके, गोदी में लेके। गोदी में। अच्छा, कैसे हो अभी तुम? ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? गीतांजलि कुमारी। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ उस दिन, बता सकती हो? वो तो क्या हुआ था बताओ। एक्सीडेंट। कैसे हुआ था? वो गाड़ी दादाजी के साथ में बैठे हुए थे, दादाजी के साथ बैठे हुए थे और रुका तो गाड़ी हिल गए थे हम और गिर गए थे। तो अभी तुम आंखों से, अभी
तुम ठीक से सब देख पा रही हो, बात कर पा रही हो, सब कुछ कर पाती हो? पहले ऐसा लग रहा है? कहीं दर्द है अभी? नहीं। डॉक्टर सर, डॉक्टर अंकल है, मैडम कैसी हैं सर? यहाँ पे सब अच्छे व्यवहार कर रहे हैं? हाँ? बोलो बहुत तुम्हारा अच्छा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम गीतांजलि कुमारी है। थैंक यू गीतांजलि। हाँ। सर मैडम স্যার একটু বলবেন স্যার লাইভ চলছে নিলে না না লাইভ ফাইভ পরে লাইভে চলে যাবে স্যার কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল বাচ্চা যখন আসে তো উনি একটু লাগিয়ে নিন উনি একটু নিন বাচ্চা যখন আমাদের কাছে আসে, যা হিস্ট্রি আমরা পেলাম, বাচ্চা নিজে বাড়ির লোকের সঙ্গে বাইকে যাচ্ছিল, পেছন থেকে একটা ট্রাক ধাক্কা মারে, তাতে বাচ্চা ছিটকে পড়ে যায়। এটা ঝাড়খণ্ডে হয়েছিল এবং ওখানে লোকাল হসপিটালে দেখিয়ে ওরা বললো তো ওখানে ম্যানেজ করা যাবে না। বাচ্চা যখন এখানে আসে ফেস পুরোটা অ্যাবল ছিল, ডান দিকে চোখ তো আমরা দেখতেই পাচ্ছিলাম না, তার সঙ্গে যেটা ছিল সিটি স্ক্যান করে দেখা গেছে যে ব্রেন ইঞ্জুরিও ছিল। অ্যান্ড বাকি ট্রমা প্রোটোকল করা হয়েছে। বাচ্চাকে আমরা পিডিয়াট্রিক আইসিইউতে অ্যাডমিট করে ম্যানেজ ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন করা হলো। রিসাসিটেশনের পরে যখন অ্যানেস্থেশিয়া ক্লিয়ারেন্স হয়, বাচ্চা স্টেবল হয় ব্লাড ফ্লাড দিয়ে, তারপরে আমরা ওটিতে নেই। তাতে যখন দেখা যায় আন্ডার অ্যানেস্থেশিয়া চামড়ার সঙ্গে চোখে পাতা আইলিড যেটাকে আমরা বলি পুরোটা অ্যাবল ছিল, বালবা কনজাংটিভা থ্রু অ্যান্ড থ্রু রিপড অফ কেটে গিয়েছিল, নাকটা কেটে গিয়েছিল ভেতর থেকে যে কানেকশন উইথ দ্য নেজাল ক্যাভিটি, তো পুরোটা রিকনস্ট্রাকশন করা হয়েছে। তাতে মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ওয়াজ আই। চোখের যদি ঠিক করে রিকনস্ট্রাকশন না হয়, চোখ খোলা বন্ধ করা, চোখে পাতা খোলা বন্ধ করা উড হ্যাভ বিন আ প্রবলেম। তার সঙ্গে যদি কর্নিয়া ইঞ্জুরি হয় কিংবা অ্যাব্রেশন হয়, তাহলে লেটার অন ব্লাইন্ডনেস হওয়ার একটা চান্স ছিল। তো আর নাকের রিকনস্ট্রাকশন ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট, যাতে পরে নিঃশ্বাস নিতে ওর বাচ্চার কোনো প্রবলেম না হয়। অ্যান্ড অবভিয়াসলি ফেস আছে সব থেকে কসমেটিকলি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, তো এইভাবে করা দরকার ছিল যাতে বাচ্চার পরবর্তীকাল দেখতে ডিসফিগারমেন্ট কোনো না হয়। তো যেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, প্রায় 2 মাস হয়েছে বাচ্চার অনেকটা রিকভারি হয়েছে, এখনো সময় লাগবে, বাট ইয়েস 2 মাসের মধ্যে অনেকটা রিকভারি হয়েছে। শি ইজ ডুইং ফাইন।